उसकी वजह ये है कि ट्रस्ट, सिर्फ और सिर्फ वो बीच में रह के कि मुझे ये पैसे दे रहा है कंट्री, मैं ये पैसे ट्रांसफ़र करके उसकी कंट्री के पैसों में कन्वर्ट करके दे रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। फिर वो चीज़ दे रहा है, वो चीज़ उस कंट्री तक जा रही है, तो ये बीच में ब्रोकरी है, ब्रोकरी समझ लें, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन कौन सी वाली ब्रोकरी? ट्रस्ट वाली। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है RBI स्ट्रेटजी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हाउ RBI's स्ट्रेटजी विल किल द US डॉलर डोमिनेंस इन द वर्ल्ड। सो स्टार्ट करते हैं। In a major move, the Reserve Bank of India has issued a circular for international trade settlement in rupee. The Indian rupee trade could be an alternative. India and Russia can trade without the US dollar. The system could help India promote its export and facilitate trade with countries under sanction. So the RBI is deploying Economics 101, increasing the demand for rupee. Under this new system, foreign traders will require more rupees, and more demand equals more value. Hi everybody, on 11th of July 2022, the Reserve Bank of India made a very bold announcement whereby domestic traders could settle their imports and exports with Indian rupees. And this move of taking the INR global is a very big deal because it is set to help India do trade directly with Russia without depending on the American banks. So on one side, while this could push us into new horizons of world trade with Russia, Iran and Venezuela, on the other, this move could actually destroy our relations both with the US and Europe. So this is not just a major move from the economic standpoint, but also from the geopolitical standpoint. So the question is, what is RBI's strategy behind bringing this system? How will this help us trade with Russia and Iran in spite of the Western opposition? How will this help the economy of India? And most importantly, what are the study materials to help you understand this system better? This video is brought to you by Multiple, but more on this at the end of the video. The first thing we need to understand is, why is RBI suddenly allowing international trades to be settled in INR? Well, this is because when Russia invaded Ukraine, the American sanctions removed Russia from something called the SWIFT network. And this has brought several trade challenges for India and many other countries. Now, to understand this RBI strategy, we first have to understand how does the existing SWIFT network work and how have the US and Europe very cleverly bullied the world trade with sanctions in the name of world peace. So let's understand how does the SWIFT network work. You see guys, the SWIFT network usually involves 6 different entities. These are the Indian trader, Indian bank, American bank 1, American bank 2, foreign bank and foreign trader. Now the highlight over here is that the Indian bank will have an account in the American bank where it has its money in dollars. Similarly, the Sri Lankan bank will have a bank account in American bank too, where again they will store their money in US dollars. This is because only US banks can hold dollars. This is the reason why you will see that almost all the banks in the world have an account with a US bank, wherein they have their money stored in dollars. So let's say Reliance wants to import minerals worth 1 crore rupees from Sri Lanka. So what Reliance would do is, they would give the Indian bank 1 crore Indian rupees and ask them to pay the same amount in dollars to the Sri Lankan trader's account in the US. So now that Indian bank has 1 crore rupees in its Indian account, it would send a message to its dollar account in America to send 1 crore worth of dollars to Sri Lanka's bank's dollar account in the US. In this case, assuming 80 rupees to dollar to be the exchange rate, $125,000 would be transferred from the Indian account in the US to the Sri Lankan account in the US. And now that the Sri Lankan bank has $125,000 in the US account, it would pay the Sri Lankan trader the equivalent of $125,000 from its account in Sri Lanka. So assuming the exchange rate to be 350 between dollars and Sri Lankan rupee, the Sri Lankan bank would pay 4 crore 37 lakh 50,000 Sri Lankan rupees to the Sri Lankan trader. So here, as you can see, this system requires a lot of communication between different banks. It needs a lot of calculation to be done due to fluctuation in exchange rates, and more importantly, it requires a complex network of thousands of banks from all across the world. Therefore, it is managed by a highly sophisticated messaging network called the SWIFT network. And
this network is very tightly controlled by both the US and Europe. And the catch over here is that more than 50% of the international trades are done through the SWIFT messaging system alone. So the question is, what is the problem with this system and why is the RBI trying to build an alternative? Well, there are three major problems with this system. Firstly, since this entire system is controlled by Europe and the US, if they do not like you, they will just impose sanctions and cut you off from the SWIFT network. So in short, they will not let you trade through the SWIFT system. And this is what the West did to Iran. Secondly, not letting you trade could still be acceptable, but since US has control over all the country's dollar accounts, they could even freeze your money that is kept in their US bank accounts. And this is what happened to Russia, wherein after the Ukraine invasion, $300 billion of Russian foreign reserves have been frozen. So in spite of having $300 billion, Russia cannot use its own money to trade. We will limit Russia's ability to do business in dollars, euros, pounds, and yen. The pressure on Russia and on Vladimir Putin is growing. New sanctions on its central bank just today. The sanctions against the Central Bank of Russia, which were enacted on Monday morning, are probably the single largest sanctions action in modern history. And lastly, this system is very costly. Since all four entities involved in the system take a commission, the cost of transferring money itself costs you anywhere between 1 to 5%. So on a transfer of say 120 crores, if the banks add a 3% exchange rate margin, that means they would charge you 3.6 crore rupees just of the exchange rate. So all of this put together, even if India wants to trade with Russia, even though we do not have anything to do with the Russia-Ukraine invasion, just because the West does not like it, we are not able to trade with Russia with ease. And what's even worse is that it's not like the Europeans have stopped trading with Russia, because they realized that if they do not get Russian gas, their economy will fail. So you know what? They have made exceptions such that some Russian accounts will be allowed to operate so that Europe can still use Russian gas and at the same time be the moral police of the world. You know, somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. Tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? This is how the West is using its so-called supremacy to hinder other countries' trade in the name of moral policing and world peace. And this is where, ladies and gentlemen, RBI's move comes in. Here's where India has come up with an alternative system to bypass this system and still do business with foreign countries. And they did that by allowing international trade to be done in Indian currency. Now, if you look at the RBI notification, they say that this can be done through something called Vostro account. So the question over here is, what is Vostro account? How will this transaction actually happen? And if executed, how will this benefit India? Well, to understand the system, let's say a Russian company wants to trade with an Indian named Akshay Kumar, and he wants to do that without going to SWIFT. So now the Russian company will have a Russian bank account which has money stored in rubles, and this Russian bank will also have an account in India where they would store the money in Indian rupees in an Indian bank. And this account is what is called as Vostro account. So basically, it's a bank's bank account held by a foreign bank. In this case, it's a Russian bank's bank account held in the Indian bank. So now, if Akshay Kumar wants to import sunflower oil from a Russian company, here's how it will work out. Firstly, Akshay Kumar pays 5 crore Indian rupees to the Russian bank account in the Indian bank, which means the Vostro account will get 5 crore Indian rupees. Then, since the Russian bank has 5 crore Indian rupees in its Indian account, assuming exchange rate to be 1.5, this Russian bank will use its account in Russia to pay the sunflower oil trader a converted sum of 3.33 crore ruble. That is how the Russian trader gets 3.33 crore ruble in his account. Now mind you, this would also involve commissions from both the Indian bank and the Russian bank. So in reality, he would get 3.33 crore ruble minus commission charges in his account. Similarly, this Vostro account will also be used for exports. So let's say a Russian company wants to import tea from India. So the Russian company would pay 100,000 Russian rubles to the Russian bank. Then, since the Russian bank has Indian rupees stored in the Vostro account in India, that Vostro account would pay 1,50,000 Indian rupees to the tea company. This is again assuming an exchange rate of 1.5 for simplification of calculation.
So just like last time, the commissions will be deducted on both sides and the remaining amount will be transferred. This is how the transactions are expected to change format once this system is brought into play. Now the question over here is, if this system is brought into play, what are the advantages that India will enjoy? Well, here's where we've got two game-changing advantages and one big threat that is involved in opting for this system. The first advantage is that we'll be able to trade with Russia, which is one of our biggest trade partners with a bilateral trade of $13 billion. And considering the condition of Russian trade right now, we could get our goods at a much cheaper cost. Secondly, it's not just Russia, but we could also start trading with other countries that have been sanctioned by the United States, and this includes critical players like Venezuela and Iran. And fun fact over here is that both these countries had already shown interest in using this kind of system, so that's pretty good. Cherry on the cake over here is that this list also includes the one and only United Arab Emirates. So this system will help us a lot in terms of decreasing our dependence on dollars. It will help us a lot in protecting our trade from the whims and fancies of the West, and most importantly, it will ease the pressure on our exchange rates as of now. And lastly, the biggest threat to us is that we are literally challenging the dominance of Uncle Sam's dollars. So obviously, the United States will definitely not be happy about it. So don't be surprised if this move is taken back or if United States threatens to impose sanctions on India. Because mind you, our bilateral trade with US stands at $119.42 billion. So here's where we might face some trouble. This is all that you need to know about the RBI notification, its functioning and its geopolitical implications. And this brings me to the last part, which are the study materials to help you understand this fight of currencies better. Before we move on, let me introduce you to our partners who are the world's first Save Now, Buy Later app, Multiple. Multiple is an antithesis to BNPL. On the Multiple app, you can invest for your plannable future spends, be it your vacation travel, anniversary, jewelry, dream iPhone, or even your insurance premium amount. You can start with a savings goal for the future spend, say 3 to 12 months in advance, to which you add money every month. Multiple being a SEBI-registered investment advisory, it helps you invest your savings in curated and commission-free direct mutual funds that are personalized especially for you and your goals. This means that you earn market returns on your money before you spend it. The best part is that Multiple has partnered with many of India's top brands through which you can start earning 5 to 10% of your savings every month from the brands directly. This brand earning and the market return can be used for your future spend, and this is over and above the brand's website offers at the time of the purchase. For example, if you want to travel to Maldives during the new year, just complete your onboarding, risk profile and basic information, and start with your travel goal by selecting the target amount and duration of saving. Then, Multiple app will tell you the right investment allocation based on your goal, risk profile and current market conditions. It also gives you the option to tag a brand, which will give you additional offers from the brand that are over and above any website or app offers when your goal is complete. You have full flexibility to decide if you want to or don't want to purchase with the tagged brand later. Then all you have to do is select the payment method for your investments, and that's it. Your smart saving plan for Maldives travel is ready. With a market return of anywhere between 5 to 12% IRR plus additional brand benefits up to 20%, that can save 10,000 rupees more as compared to the BNPL method or credit card or even from your bank savings. So if this sounds useful to you, check the special link in the description and download this amazing Made in India Save Now Pay Later app now. Also, there's a special offer of 500 rupees for the Think School community in the description. So don't forget to use the invite code while signing up. Moving on, the first study material that I'm attaching is this wonderful article written by Deepak Shenoy, and here's where he explains this entire system with this sweet little diagram. So read through this document and you'll get a very good idea about Vostro accounts and the Russia-India transactions. The second thing I'm attaching is a document on the deep technicalities of the SWIFT network. So now that you understand the oversimplified version, you could go deeper and understand the tech behind this system. And thirdly, I am attaching a few articles on the US sanctions and the information related to SWIFT that's coming straight from their website itself. So read through that and do let me know what you think about in the comment section. That's all from my side for today, guys. If you learned something valuable, please make sure to hit the like button in order to make YouTube Baba happy. And for more such insightful business and political case studies, please subscribe to our channel. Thank you so much for watching. I will see you in the next one. Bye bye. जी जनाब, सबसे पहले तो मैं बहुत ही
वीडियो की तारीफ़ करूँगा कि किस डिटेल के साथ उन्होंने पूरा मुद्दा समझाया। एक छोटी छोटी चीज़ों को लेके बिल्कुल बच्चों की तरह, जैसे स्कूल के अंदर क्लास के अंदर एक समझाया जाता है ना, इस तरह से मेन मुद्दा क्या है डॉलर का, और किस तरीके से डॉलर ने समझो पूरी दुनिया को एक तरह से कंट्रोल करके रखा हुआ है। और किसी को भी, चाहे वो जो स्विफ्ट का जो सिस्टम होता है, या अमेरिका चाहे जिसको भी तो सज़ा के तौर पे उससे काट ले, तो उसका पूरी दुनिया से किस तरीके से नाता कटता है, लेन देन कटता है, कितना नुकसान होता है। अच्छा, रशिया को उन्होंने नुकसान पहुंचाया भी। इस पर कड़ी शर्तें रखनी चाहिए, और मैं पहले भी जैसे कई वीडियो में कह भी चुकी हूँ कि ये डोमिनेंस ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि मुझे समझ नहीं आता कि हम इस तरफ कब आए, क्यों आए, कैसे आए। क्योंकि हमें, जैसे मुझे रशिया से कोई चीज़ चाहिए और रशिया को मुझसे कोई चीज़ चाहिए, तो हम तो ये वास्तव सिस्टम के थ्रू लेन देन कर सकते हैं दो कंट्रीज आपस में, तो फिर हम स्विफ्ट के चक्कर में क्यों फंसे? आप मेरी बात सुने ना, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक करेंसी चाहिए थी जिसकी पूरी दुनिया वैल्यू माने, डॉलर। एक करेंसी ज़रूरी था ये। उसकी वजह ये है कि अमेरिका था सुपर पावर, अमेरिका है सुपर पावर। अमेरिका के डॉलर की जो हैसियत है बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। तो और उसकी इतनी स्ट्रॉन्गनेस है कि इन फ्यूचर उसकी स्ट्रॉन्गनेस ख़त्म होने वाली नज़र नहीं आ रही। तो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया, अब मिसाल के तौर पे आपसे कोई कहे कि आपको सबसे ज़्यादा यकीन किस करेंसी पे है, तो हर शख्स कहेगा मुझे डॉलर पे। डॉलर की एक पुख्तगी, डॉलर एक स्टेबल, तो ऑटोमेटिक इंसान अपनी कंट्री की करेंसी को भी बोलेगा। नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में मिसाल के तौर पे इंडियन रुपीस किसी और के काम का नहीं है, और रूबल जो है वो इंडिया के काम का नहीं है, अगर आपने कंट्री में देखा जाए यूज़ करते हुए। लेकिन डॉलर एक ऐसी वाहिद चीज़ थी, एक करेंसी थी कि जो हर कंट्री के काम, जो अगर आप दें तो आपको अपने मुल्क की करेंसी मिल जाएगी। कोई भी करेंसी, किसी मुल्क की भी करेंसी लेना चाहेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू सब मानते हैं। तो ऑटोमेटिकली, अच्छा फिर दूसरी चीज़ ये है कि ये एक तरह से जाल भी समझ सकती हैं आप इसको, कि बहुत सारी चीज़ों में फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं वो हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। सबसे पहले तो अभी आप इंटरनेट देख लें, इंटरनेट पे ही पूरी दुनिया चल रही है। अगर चाहेंगे लोग, जो कंपनियां इनकी इंटरनेट की काम कर रही हैं, गूगल है, यूट्यूब है, कोई भी XYZ, खुद इंटरनेट है, यानी कि जिस इंटरनेट के थ्रू हम चीज़ें करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, बात करते हैं, कॉल करते हैं, जो भी है। तो अगर इंटरनेट किसी कंट्री को काट दिया जाए, हम आपका इंटरनेट ही काट देते हैं, हम आपको इंटरनेट की सहूलत ही नहीं देते, तो उस कंट्री का क्या हाल होगा? आप ये कहना चाहते हैं कि सब इनके, हाँ, कंट्रोल, सब इनके हाथ में है, सब इनके कंट्रोल में है। तो मैं एक चीज़ सोच रही हूँ कि गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ऊपर उनके CEO इंडिया के ही लोग बैठे हुए हैं, तो क्या हम अपना अलग से नहीं बना सकते? देखिए, ताकि इनकी डोमिनेंस थोड़ी ख़त्म हो। जैसे कि ये अब अभी थोड़ी सी बात करते हैं करेंसी की ही, ऐप वगैरह की तरफ या इंटरनेट की तरफ बाद में जाएंगे। मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहती हूँ कि ये तो चले मजबूरी का सौदा था, क्योंकि उनको उनसे लेना था गैस और फ्यूल जो भी है, तो इसलिए, और क्योंकि स्विफ्ट ने उनको कट ऑफ कर दिया था रशिया को, तो फिर मजबूरी के तहत इंडिया और रशिया ने ये एक रास्ता निकाल लिया। तो ये मजबूरी का रास्ता क्यों था? मेरे हिसाब से हमें कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव रखना चाहिए। बिल्कुल यही वाला, ठीक है ना, ये अक्लमंदी है कि अगर स्विफ्ट कट ऑफ करे किसी भी कंट्री को, तो वो कंट्री मोहताज ना हो। अगर वो ट्रेड करना चाहे तो वो दूसरे कंट्रीज के साथ कर सके, कोई ना कोई एक उसका नामुल बदल होना चाहिए हमारे पास। और दूसरी बात ये है कि ये जो स्विफ्ट के थ्रू हम ट्रांजैक्शन करते थे अपने अमाउंट की कंट्री टू कंट्री, तो मुझे एक चीज़ तो ये भी नहीं समझ में आई कि वो तो अच्छा खासा हमसे कमा रहे हैं, कि जैसे कि 3.5 करोड़ रुपीस सिर्फ उनका कमीशन था। सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह यह है कि ट्रस्ट, सिर्फ और सिर्फ वो बीच में रह के कि मुझे ये पैसे दे रहा है कंट्री, मैं ये पैसे ट्रांसफ़र करके उसकी कंट्री के पैसों में कन्वर्ट करके दे रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है। फिर वो चीज़ दे रहा है, वो चीज़ उस कंट्री तक जा रही है, तो ये बीच में ब्रोकरी है, ब्रोकरी समझ लें, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन कौन सी वाली ब्रोकरी? ट्रस्ट वाली। ठीक है, कि हाँ यार वाकई कि ये कंट्री भी इस बंदे को जानता है, यानी स्विफ्ट को जानता है, वो कंट्री भी स्विफ्ट को जानता है, और स्विफ्ट आपके साथ चीट नहीं करेगा, ट्रस्टेबल बंदा है, तो आप दोनों बिलीव कर रहे हो। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। आप अगर किसी से कोई चीज़ लेते हैं, पैसे देते हैं, या आप चीज़ लेते हैं, वो आपको पैसे देता है, दो चीज़ें होती हैं। तो दोनों चीज़ों में कोई चीज़ तो पहले होती है ना। मिसाल के तौर पर पेमेंट आ गई, ठीक है, माल पहुंच जाएगा। माल ना आए
तो फिर आप तो ठीक है ना, वो बीच की जो कंपनी है, जो बीच की जो बैंक है, वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार ये चक्कर है सारा। तो उस चक्कर में वो लोग जिम्मेदारी के पैसे रखते हैं। वो मतलब है कि अच्छा आपके मैसेज आ जाता है कि हाँ भाई आपकी अमाउंट फलाने बैंक में पहुंच गई स्विफ्ट के थ्रू। अच्छा, फिर वो कंट्री माल भेज देगा, माल भेज गया, वो कंट्री उसको पेमेंट दे देगा, बीच के बंदे के पास पेमेंट आ चुकी है, ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो इस तरह का समझ लें इसको। लेकिन ये है कि अब जो है इसको दुनिया चेंज कर रही है, इनकी मोनोपोली कहें क्या कहें, इनका जो अजारादारी है, डोमिनेंसी कहेंगे ना, हुक्मराना जो इनकी एक हाकिमाना तबीयत शुरू से रही है, दूसरे कंट्रीज़ को गुलामी समझते हैं एक तरीके से। खैर थर्ड क्लास कंट्री समझते हैं ना, थर्ड क्लास वर्ल्ड। अब इंडियन करेंसी यूज़ हो रही है, कुछ लोग कुछ कंट्री, मुझे ऐसा लग रहा है अब डॉलर की वैल्यू गिरेगी, क्योंकि उनको ये लगेगा कि हमने एक दूसरा नामुल बदल ढूंढ लिया है। जैसे कम से कम इंडिया और रशिया को लेकर तो वो इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि जी ये मोहताज नहीं है। और भी कंट्री यूज़ कर रहे हैं, यूएई का भी जिक्र किया ना। हाँ नहीं, वो कह रहे थे यूएई भी साइन अप कर ले। अच्छा, इनको देखा देखी दूसरे कंट्रीज भी स्टेप लेंगे, क्योंकि देखिए अच्छा दो कंट्रीज का तो उन्होंने बार बार नाम लिया कि उनको तो कट ऑफ किया हुआ है, ईरान को और एक और कंट्री का नाम ले रहे थे जिसपे अमेरिका ने पाबंदियां लगानी है। और उसका जिक्र एस जयशंकर ने अपनी उसमें स्टेटमेंट में भी दिया है, अपनी स्पीच में भी किया है बात करते हुए इंटरव्यू में। तो मैं हैरान हूँ कि वो जिसको चाहे निकाल बाहर करें, बिल्कुल नुकसान, जिसको चाहे नुकसान पहुँचा, वो कोई ब्रीफिंग भी नहीं देते, जिसको चाहे नुकसान दे सकते हैं, जिसको चाहे फ़ायदा दे सकते हैं। अपनी वो निकाल बाहर जब करते हैं स्विफ्ट में से, तो वो कोई ब्रीफिंग नहीं देते, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है किसी चीज़ का, वो जिसको चाहे निकाल। लेकिन उसका कंट्रोल तो अमेरिका के पास है। नहीं, मैं अमेरिका की ही बात कर रही हूँ कि अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज जो भी हैं, तो वो अगर स्विफ्ट से निकालते हैं तो वो उसका कोई रीज़न नहीं देते, ठोस रीज़न नहीं देते, उनकी मर्जी है, वो निकाल सकते। पाबंदियाँ लगा दी या सेंक्शन लगा दी, हमने आपसे ये कहा था, आपने ये नहीं किया, तो बस ये हमारी नाराज़गी, तो हमने आपको निकाल दिया, ठीक है जी। जिससे कोई भी कंट्री जो है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री ना हो तो उस कंट्री को नुकसान हो सकता है। अच्छा, रशिया भी इस सैंक्शन के बाद से थोड़ा हिल गया था, लेकिन उसके बावजूद भी रशिया ने अपने तेल की वजह से, अपनी गैस की वजह से बहुत सारे अच्छा मज़े की बात, इस दौरान भी यूरोप को गैस चाहिए तो वो यहाँ से जा रही है। एस शंकर ने कहा तो हम फ्यूल ने तो मसला, आप गैस तो मसला नहीं है। मतलब अजीबोगरीब बात है कि आप सैंक्शन लगा रहे हो खुद, वो ये चीज़ नहीं, आप ये तो ये बात हो गई, आप गाली ना बको और वो खुद गालियाँ बक रहे हैं। इससे इसको यूँ समझ लें कि आप हमें तो फ़ायदा दे रहे हो तो वो फ़ायदा रहेगा, लेकिन आप जो दुनिया से फ़ायदा ले रहे हो वो हम आपको नहीं लेने देंगे। यानी हम स्ट्रॉन्ग रहें, हम अपने आप को वीक ना हमें कोई मसले मसाइल ना आए, मैं सामने वाले को यूज़ कर सकती हूँ तो करूँ, लेकिन मैं दूसरे को नहीं करने दूँगी। बिल्कुल। लेकिन अब इसका मतलब है कि इस तरह के मामलात की वजह से जो इस मरतबा हुआ, दुनिया जो है, जो वर्ल्ड लीडर्स जो हैं, उन्होंने सर जोड़ के बैठे और इसका कोई ना कोई हल निकाल रहा है, और इस हल की वजह से कल को किसी और कंट्री पे परेशानी ना आए। क्या पता, मुझे ऐसा भी लगता है कि किसी और कंट्री को ही ये ट्रस्ट मिल जाए, जैसे डॉलर है। मैं बता तो रहा हूँ कि ये हल ज़ाहिर सी बात है। और फिर आपने एक बात भी बोली थी, आपने कहा था कि 2 ब्लॉक्स हों कम से कम कि बैलेंस राइट। अच्छा, अभी मैं देखती हूँ ज़्यादातर एक बॉसी पना जो दिखाता रहता है, ज़्यादातर जो हाकमियत दिखाता है वो यूएस ही दिखाता है, ठीक है ना। और दूसरा कंट्री उसके सामने, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, कोई और कंट्री नहीं बोल पाता फिर भी इतना। भले हम अपना काम कमाते हैं, अपना खाते हैं, लेकिन फिर भी हम डरते हैं, पता नहीं क्यों, लाशऊरी तौर पर एक चीज़ हो गई, एक छाप बैठ गई है। वही उसकी सेम वही वजह आती है कि बहुत सारी दुनिया की चीज़ों का कंट्रोल इन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है। तो लोग ये कहते हैं कि हमें दुनिया से कट ऑफ नहीं होना, हम पंगा लेकर फंस जाएंगे। और बहुत सारे लोग तो ऐसे, बहुत सारे देश सॉरी ऐसे भी हैं जो सिर्फ इमदाद तक लेते हैं, जिनके गरीब कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे इमदाद आती है अमेरिका से या उनसे। और हम क्या बात कर रहे हैं, फिर तो एक बहुत ही ज़बरदस्त मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और बड़ी भैया ने डिटेल से वीडियो बताई, उर्दू में होती तो और अच्छा था। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।